Good morning, students. So in past sessions, we have seen journal entries and ledger accounts. Before starting any session, as usual, yes, every one of you have to write it in the comment section. I always told you to write it in the comment section before starting any session, golden rules of accounts. So no one is writing, beta. No one is writing. So whenever my session is there, you have to write it. So good morning. Personal account, debit the debtor, credit the creditor. Debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out. Nominal account debit all expenses and losses, and all incomes and gains have a credit balance. Asset minus liability is equal to capital. It's a modern approach. Asset had a debit balance, liability credit balance, and capital is also credit balance. Income minus expenditure is equal to profit. Income credit, expenditure debit, profit credit balance. And expenditure minus income is equal to loss. Loss has a debit balance. So friends, in last session, we started with journal entries. Good morning. Tarunji, Tamannaji, Purva, Aishwarya, Aditi, Ashwadesh, Avdesh. Sorry. Good morning, beta. Lucky, Ashutosh, Aditya ji. Chalo. So we will start today's session. बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए आज. चलिए. अभी तक गोल्डन रूल्स आए नहीं है आप लोगों से. So we completed format of illustration number 2 in the last session. So illustration 2 पे हम लोगों ने कौन सा ये किया था बेटा? लेजर अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन वी स्टार्टेड विथ. करेक्ट है. सो ये सेशन की शुरुआत भी अभी हम लोग लेजर अकाउंट से ही करेंगे. ओके, चलिए आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 2. First, I will give you journal entries. Yes, you can write journal entries. Oh, already we have written journal entries. Okay, so journal entries we have completed. Chaliye. So cash in hand, first account, to balance brought down. So you can write down to balance brought down. On the debit side, it's a debit balance. To balance brought down. First January. 8,000. Bank account. To balance brought down. 25,000. Inventory account. To balance brought down. 20,000. Building. To balance brought down. 10,000. Trade receivable Vijay. To balance brought down. 2,000. And Madhu. To balance brought down. 2,000. Anand. Buy balance brought down. 5,000. Credit balance. And capital account. 1st January. Buy balance brought down.
55,000. Friends, now our opening balances are completed. Now we will start with posting part. Now see how to do posting. First entry, purchases goods worth rupees 5,000 for cash less 20% trade discount. Trade discount is never recorded. So we will record this transaction. Purchases account debit 4,000. So purchases debit. Whenever you are doing ledger posting. So now in purchase account, debited with 4,000. So purchase account debit. So what is the entry, beta? See the entry. Purchase account debit 4,000 to cash 3,800 to discount received 500. Now how to do posting part? Purchases debit. So I will write on the debit side, purchases debit 4,000. Okay. So remember, debit 4,000, then cash account credit. First I will write only amounts. On the second line, write down 3,800. On the second line, write down 3,800 and discount received 200. Credit. So debit 4,000, credit 3,800. So you can see 4,000 is debited, 3,800 and 200 are credited. So debit is matching with credit. Okay, got the concept? So on debit side, what to write now? In purchases, you will write to cash and discount. Or you have one more option. You can write to cash 3,800. Don't write it in this. This is an option, beta. And to discount received 200. You can merge this account. Otherwise, you can write on separate lines. Both options are correct. Okay. So to cash and discount. See on the debit side, it always starts with 2. तो डेबिट साइड को हमेशा 2 से शुरुआत होगा. इतना याद रखिए. To cash 4,000 and now on the credit side of cash account, by purchases. What is the date, beta? Date is 1st January. So 1st Jan only. By purchases. So cross reference. In cash, it's a cross reference. And discount received by purchases, cross reference. So whenever you are in the learning stage, try to write amount first. पहले क्या सीखो? Amount को लिखना सीखो. And amount के बाद you can write, बेटा क्या लिखोगे? Amount के बाद लिखना particulars. Learning phase में. जब आपकी mastery आ जाएगी, when you will be 100% sure. After that, you can do particulars first and then amount. But in learning phase, always try to write amount first and then particulars. Okay. Small, choti, but moti बातें. Okay. लिख दिया सबने? Yes. Very good. Very good. Yes, beta. Sadhana, whenever brought down is always opening balance and carried down is a closing balance. Carried down ये closing balance होता है. Now you will tell me for the second transaction. What are you going to write first? Cash account debit 1980, discount account debit 20, and then 2,000 is credit. So कैसा है? 1980 debit, 20 debit and credit 2,000. किसको डेबिट देना है? First, what are you going to write? Yes, tell me.
What are you going to write first? Are you going to start with particulars? What are you going to write? Tell me it in comment section. Cash account debit. Yes, beta. What are you going to write first? Cash account debit. Very good. पंजाबी आसिफ बराबर उल्टा ही बोलता है. ठीक है, रहने दो. ऐसे भी बच्चे रहते हैं कुछ जो एग्जैक्टली उल्टा बोलते हैं कि मैंने पर्टिकुलर्स बाद में लिखने को बोला, पर वो अपने प्रोफेसर लोगों को परेशान करना ही उनको अच्छा लगता है. इट्स ओके. अमाउंट पहले लिखो. वेरी गुड. सिर्फ एक ने गलत आंसर दिया. 1980 कैश अकाउंट में. देन डिस्काउंट अलाउड कॉलम. Discount allowed column 20 on the first line. Cash account को डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट एंड विजय को क्रेडिट. So विजय account on the credit side, second line. Don't write in front of to balance brought down and by balance brought down. So always write on the second line. To balance brought down ये हमेशा ब्लैंक रखा करो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दीज आर सम प्रेजेंटेशन स्किल्स. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलवेज कीप ब्लैंक बेटा वहां पे. ओके, सामने. सो नाउ कैश अकाउंट डेबिट. सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट हियर? दिस इज अ 4th Jan, आई थिंक 4th Jan. ओके, सो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू विजय, क्रॉस रेफरेंस. देन डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में 4th Jan टू विजय एंड विजयच्या क्रेडिटला 4th Jan बाय कैश and discount allowed. You can write it separately. You can write it separately. By cash 1980 and by discount allowed 20. You can write separately or you can merge it in the Vijay directly 2000. So this is the simplest technique. Whenever this is a compound entry, when more than 2 means now double entry means cash account debit to Vijay. Okay, and what is compound entry? Cash debit, discount debit means more than 2 accounts to Vijay in one entry. So it is called as compound entry. Compound entry. And this is simple entry. Simple entry means only 2 accounts, cash to Vijay. But whenever there is a compound entry, now what is compound entry? A account debit, B account debit, to C, to D. So this is more than 2 accounts. In this case, first write amounts. In compound entry, first write amounts and then write beta balances. तो ये याद रखो, पहले अमाउंट लिखो फिर बैलेंस पर्टिकुलर्स लिखना in compound entry. So what is simple entry? Only 2 accounts, cash to Vijay. But cash account debit, discount account debit, to Vijay account, ये क्या होता है? This is compound entry. इसको हम लोग बोलते हैं compound entry. So entry क्या था? Cash account debit, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय. सो कैश के डेबिट में लिखा, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिखा एंड विजय के क्रेडिट में लिखा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ एवरीवन इज क्लियर? एनी डिफिकल्टी? एनी डिफिकल्टी टिल नाउ? सबको पोस्टिंग आने लगा बेटा? अरे आने लगा क्या? So those students who are not comfortable in ledger posting, now everyone is clear beta? Chalo. Now do the second one. Yes, third one. Jan 8.
नाउ डू यस टेक पेंसिल इन हैंड, बेटा पेंसिल लीजिए, सब लोग पेंसिल लीजिए and do this entry ka posting. So what is the entry? Plant account debit to Mukesh and plant account debit to cash. So everyone by pencil do is posting. बेटा January 8 का posting कीजिए. चलो 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 fast कीजिए. Plant account to Mukesh and plant account to cash. चलो posting part complete कीजिए. चलो चलो fast. You are in learning stage. So first question है तो थोड़ा मैं slow जाऊंगा. सेकंड क्वेश्चन से मैं स्पीड पकड़ेगा, रफ्तार का जुनून, फास्ट एंड फ्यूरियस. यस बेटा सुनील, थैंक यू. यू आर मेकिंग अकाउंट्स मोर सिंपलर. यस चांडक, कुछ नहीं बेटा, डेबिट क्रेडिट लिखने का तुम लोग पोस्टिंग करो, फिर अपने आप आएगा. गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट पेंसिल से कीजिए. पेंसिल से कीजिए, पेंसिल से किया तो अपने आप आ जाएगा. डू इट बाय पेंसिल, दोज हु आर नॉट कॉन्फिडेंट. चलो प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश. यस चलो तो प्लांटच्या डेबिटला, सर प्लांट अकाउंट किधर है? हाँ मिल गया. प्लांटच्या डेबिटला सर, प्लांट टू मुकेश ना, सो प्लांट के पहले डेबिट में लिख देता हूं एंड मुकेश के क्रेडिट में लिख देता हूं. हाँ 5000. सर काय की डेट थी? डेट थी 8 जैन. 8 जैन टू मुकेश. प्लांट के डेबिट में टू मुकेश एंड मुकेश के क्रेडिट में बाय प्लांट. सर इट्स वेरी सिंपल. सो सेकंड वन, प्लांट टू कैश. प्लांट के डेबिट में 300. अच्छा, प्लांट के डेबिट में 300 एंड कैश के क्रेडिट में, टू कैश है तो कैशच्या क्रेडिटला. कैश 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 कैश. हाँ कैश के क्रेडिट में. सर 8 जैन ओनली. इधर क्या लिखेगा मैं? कैश के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड प्लांटच्या डेबिटला बेटा, प्लांटच्या डेबिटला, प्लांटच्या डेबिटला मीन्स इन मराठी बेटा प्लांट के डेबिट में, इन मराठी इट इज चा. प्लांट टू कैश 8 जैन. चलो यस सर करेक्ट मिला. चलो नेक्स्ट वन, रहीम टू सेल्स. रहीम टू सेल्स, नेक्स्ट एंट्री रहीम टू सेल्स. चलो हु विल डू? चलो 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 फास्ट. यस एवरीवन. चलो नाउ डू पोस्टिंग फॉर 2 एंट्रीज. Rahim to sales, I am waiting for you and write down over after doing posting in comment section. Chalo, Rahim to sales and then cash account debit, bad debts account debit to Rahim. You have journal entry. Sold goods to Rahim, Rahim to sales. Rahim is our debtor, to sales is our income. Cash account debit comes in, bad debts is our loss to Rahim. Rahim is our giver. Do 2 entries का posting. सबसे पहले आस्था घोष ने लिख दिया ओवर सर. सो यू अंडरस्टूड द टेक्निक बेटा. खुशी सोनी देखो एक बार एकदम सिंपल है, पहले पोस्टिंग करना है अमाउंट का और उसके बाद पर्टिकुलर्स लिखना है. अभी आप मुझे वापस वापस वही चीजें मत पूछे. चलो सो पोस्टिंग पार्ट नाउ. रहीम चा डेबिटला सेल्स. रहीम के डेबिट में सेल्स 600
एंड सेल्स के क्रेडिट में बाय रहीम 600. व्हाट इज द डेट बेटा? डेट इज 12 Jan, 12th Jan. टू सेल्स इन रहीम अकाउंट एंड इन सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय रहीम. ओके, वेरी सिंपल. देयर इज नो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश अकाउंट डेबिट 300, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 300. सो कैश के डेबिट में कैश कैश कैश, फर्स्ट अकाउंट कैश 300, फर्स्ट डेबिट. बैड डेट्स सर, बैड डेट्स नीचे 300 एंड रहीम के क्रेडिट में 600. ओके, सो डेट 15 Jan. सो 15 Jan रहीम के क्रेडिट में बाय कैश एंड बैड डेट्स. What is the second option that you have here? You can write buy cash 300 and buy Rahim 300. So this is also option available. So 600 must be credited. 600 must be credited. Okay. So you can write buy cash and bad debts, or you can write buy cash 300, buy bad debts 300. One and the same thing in posting side. Okay. Then bad debts cha debit la to Rahim 15 Jan. To Rahim. And last one is cash cha debit la 15 Jan to Rahim. To Rahim. Sir, easy je. Sold goods to Ram for cash 1000. So what is the entry? Cash account debit to sales account. Cash to sales. So cash के debit में 1000. Cash के debit में कितना लिखूं? 1000. And second effect, sales के sales चा credit ला. Okay. So buy cash. Date શું છે? 18 Jan. 18 Jan is the date. Buy cash. And cash चा debit ला, what are you going to write? To sales. 18 Jan. Sir, okay. Posting part completed. Now it's a part for closing. Closing beta. Now you can take on calci. Now see, debit side total. Debit side total 8000 plus 1980 plus 300 plus 1000. 11,280. Debit is more. So same posting you will do here. And on 31st Jan, you will write by balance carried down and use star mark. Use star mark. By balance carried down, use star mark. 11,280. So this total minus this one, 3,800 minus 300. So what is the balancing figure? 7180. So balancing figure is 7180. Okay. Do star mark as a balancing figure. So first one, you took the total of debit side, whichever is more. So this is debit plus. So this balance is called as debit is more as compared to credit. So credit minus. Credit side minus. Debit side plus. Bank account debit side plus. So 25,000. And on the last line, you will write by balance carried down star mark 25,000. Star mark represents or asterisk mark represents beta. It's a balancing figure. Chalo. Do for inventory beta now. Do for other accounts. Chalo, other accounts कीजिए. Other accounts. Okay, Aditi Tai. Manish Jain is saying, sir, how easy tricks you have given us for posting in ledger account. Thank you, beta. Thank you so much. पहले amount लिखना, फिर particulars में opposite side पे लिखना. Very good, beta. Very good. Cross reference. तू सीख गया रे. मनीष सीख गया तू. देख accounts आने लगा तुझे. Balance में date बेटा 31st Jan. Balance में date last date of this month.
बैलेंसिंग इज ऑलवेज डन ऑन द लास्ट डेट. सो बैलेंसिंग में जनवरी महीना ना, सो जनवरी महीना तो 31 जैन लिखने का. क्या लिखने का? 31 जैन. हाँ, सीख गए सीख गए. चलो मैं करता अभी. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोज कर दूंगा 20,000. सर बिल्डिंग को भी वही छुएगा, 31 जैन. सर इतना इजी है ना, क्या सिखाने का इसमें. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टार मार्क लगा देना रे. 10,000. अय इजी छे. विजय अकाउंट तो टल्ली है रे. विजय टैली. विजय टैली. मधु. मधु is also tally. No, Madhu has balancing figure. Buy balance carried down. Debit side is more. Buy balance carried down. Sir, 2,000 sir. 2,000. आनंद का क्या है बाबा स्टेटस? आनंद भाई क्रेडिट વધારે છે. ओके, क्रेडिट साइड इज मोर. 2 बैलेंस कैरिड डाउन. कितना आएगा इसमें? 5,000. इजी इजी. कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट का कौन सा साइड बढ़ा? अरे क्रेडिट ही बढ़ा ना. कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, आपने तो सिखाया था. 31 जैन, क्रेडिट साइड इज मोर. क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस. सो 2 बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट में आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर. 55,000. एकदम इजी છે. परचेस. सर परचेस परचेस એ આની डेट શું છે? परचेस का डेट क्या है रे? परचेस का डेट क्यों भूल गया मैं? परचेस का डेट है जनवरी 1. क्या जनवरी 1 था? हाँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन परचेसेस इधर है 4,000 सर. 4,000 31 जैन को. ओके. डिस्काउंट रिसीव्ड 200 बाय परचेसेस. देन 31 जैन 2 बैलेंस कैरिड डाउन. सर कितना बोरिंग पार्ट है ये, पर करना पड़ेगा बेटा 5 मार्क के लिए. ओके, बैलेंसिंग करना पड़ेगा. इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे. दिस इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. एग्जाम में इतने सिंपल नहीं आते. 31 जैन वी आर डूइंग सीए कोर्स. इतना सिंपल आएगा तो हर कोई सीए बनेगा. हाँ. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20 रुपीज. प्लांट अकाउंट 5,300. सर बैलेंसिंग फिगर. बाय बैलेंस कैरिड डाउन सर 31 जैन सर. बैलेंसिंग फिगर 5,300. ओके सर, 5,300. सर मुकेश का क्या स्टेटस है? चलो भाई बेटा मुकेश 2 बैलेंस कैरिड डाउन. 2 बैलेंस कैरिड डाउन. यस बेटा मुकेश 2 बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 31 जैन. ओए रहीम टल्ली है. रहीम टैलीड. यस रहीम टैलीड. ओके. सो रहीम टैलीड बेटा 600 600. एकदम इजी है. डिस्काउंट में की मिस्टेक 200 और 20 अलग अलग लिखा ना मैंने. तो सेल्स 2 बैलेंस कैरिड डाउन 31 जैन. बैलेंसिंग फिगर. स्टार मार्क लगा रहे हो ना? स्टार मार्क लगाना. स्टार मार्क इज अ बैलेंसिंग फिगर. स्टार मार्क लगाना पड़ता है. ओए बच्चों चलो बोलो. 31 जैन 300. 300. स्टार मार्क 300. ओवर. सर ओवर ओवर ओवर. डिस्काउंट में गलती हुआ है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है गलती है डिस्काउंट में. डिस्काउंट 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 डिस्काउंट. डिस्काउंट निकाला क्या? नहीं नहीं बेटा, उन्होंने एक ही अकाउंट निकाला. दिस इज रॉन्ग. डिस्काउंट रिसीव्ड इज डिफरेंट अकाउंट. यू कैन नॉट सेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. अच्छा ऐसे है, मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा. सो डिस्काउंट अलाउड इज डिफरेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज डिफरेंट. यू हैव टू ओपन 2 डिफरेंट अकाउंट्स. यू कैन नॉट मर्ज इट इन 1 अकाउंट. ओके, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9. तो मैं सजेशन दे दूंगा. जल्दी हम लोग स्टडी मटेरियल में चेंजेस लेके आएंगे. सो डोंट वरी, न्यू स्टडी मटेरियल में ये चेंजेस मिलेगा आपको. डिस्काउंट अलाउड अलग होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग होगा. यस. बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ है रे? 2 बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है मैंने. क्या कर रहा है? कैपिटल अकाउंट में 2 बैलेंस कैरिड डाउन છે. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की शुरुआत છે. सो शुरुआत बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
and to balance carried down 55,000. So opening is buy balance brought down and closing is to balance carried down. 2 is a closing, carried down is a closing रे बेटा. क्या नहीं समझ में आ रहा है? इतना सिंपल. So it is compulsory to write balance carried down on 31st Jan. Beta, now see, nominal accounts are never carried down. Now this is a ledger account. That's why nominal accounts are never carried down. See, now cash account is a real account. You can carry it down it. Bank account is a personal account. You can carry it. Inventory बेटा ये trading में चला जाता है. Where to transfer it? In trading account. So inventory account will never open. But this is only for concept clarity. Sir, buy balance building real account. So it is buy balance carried down. So विजय पर्सनल अकाउंट है, कैरिड डाउन आ सकता है. सो मधु पर्सनल है तो कैरिड डाउन आ सकता है. आनंद पर्सनल है, आ सकता है. बट बेटा परचेसेस नॉमिनल है, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं होता. इन रियल लाइफ इट्स बाय ट्रेडिंग होता है. क्या होता है ये? बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू. सो परचेसेस का कंफ्यूजन है. परचेसेस अभी मैं बोलता हूँ नॉमिनली ट्रीट करो, डोंट ट्रीट रियल अकाउंट. परचेसेस किसका ट्रीट करना? नॉमिनल अकाउंट. तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखने का. क्या लिखने का? बाय ट्रेडिंग अकाउंट. यस बेटा, यस यस यस, वेरी गुड. मेरे सीआईडी लोग जागरूक हो चुके हैं. एलएफ नहीं लिखते, इधर जेएफ लिखते हैं. यस बेटा मेरे सीआईडी पीपल. सो यस, गलती हुआ है आईसीआई के स्टडी मटेरियल में. यहाँ पे जेएफ लिखना है. क्या लिखना है? यहाँ पे जेएफ लिखना है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. भूमि विमानी, वेरी गुड बेटा. डब्ल्यूआरओ वाले छा गए बेटा. इंस्टीट्यूट की गलती निकाल रहे हो आज. आयुषी भी कहाँ से? डब्ल्यूआरओ से. यस, आज इंस्टीट्यूट की गलतियों पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हो? कुछ गलती नहीं है वो बेटा, जल्दी जल्दी में हो जाता है. इंसान है अल्टीमेटली. तो तुरंत ऐसा एक आध छोटे छोटे पॉइंट से लेके उसका हंगामा नहीं क्रिएट करने का. इट्स ओके, ह्यूमन एरर से ये ओवर द पीरियड चेंज होगा. और ये मैं आपको बोलता हूँ, व्हेन वी स्टार्टेड अवर सीए कोर्स, आई रिमेम्बर स्टडी मटेरियल हमें पन्नों में आता था, पेजेस पे, वन चैप्टर वाइज आता था घर पे. ओके, पोस्टल आता था. इतनी मिस्टेक्स रहती थी तब. नाउ बोर्ड ऑफ स्टडीज, यस वी आर थैंकफुल टू बोर्ड ऑफ स्टडीज कि बोर्ड ऑफ स्टडीज ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए. अभी कैसा होता है, जिसको हंगामा करना है वो तो करता ही रहता है कि ये चेंजेस है, वो चेंजेस है. पर बेटा स्टडी मटेरियल इज बाइबल, इतना याद रखो. मेहनत लेते हैं सभी फैकल्टीज, दिन रात मेहनत करते वो लोग, इतना याद रखिए. और जो लोग इंस्टीट्यूट के खिलाफ बात करते, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए आपको उसकी अहमियत होनी चाहिए. कोई बच्चों को क्या लगता है, व्हेन वी आर पेइंग मींस हमें कुछ तो रिटर्न्स मिल रहे हैं. कोई नहीं. अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू, आप मेरे ही लेक्चर्स को आओगे बाद में, इतना मैं 100% बता के रखता हूँ. सो ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी फैकल्टीज का नहीं, पर फ्री ऑफ कॉस्ट है. गलतियां निकालनी है निकालो, कोई दिक्कत नहीं है. पर अल्टीमेटली सबके जो भी ये प्रिंट आउट्स और प्राइवेट नोट्स भी होते हैं ना, उसमें गलतियां होती है. और इंस्टीट्यूट की छोटी छोटी, अभी तो ऑलमोस्ट वी आर एट 0% एरर आप बोल सकते हो. ऑलमोस्ट 0% एरर एवरी टाइम वी आर. इवन यू विल गेट सम आफ्टर दिस चेंजेस, जो भी अमेंडमेंट्स होंगी या मिस्टेक्स होंगी, उसका हम लोग क्या होता है, एक याद रखो. मैं आपको एक सिंपली बताता हूँ. स्टडी मटेरियल छप चुके रहते हैं. एक स्टडी मटेरियल नहीं छपता है. स्टडी मटेरियल लाखों कॉपीज छपती है. तो उसको चेंज करना बोले तो बहुत डिफिकल्ट होता है, एक कॉपी के लिए नहीं. फिर नेक्स्ट जब 5-5 महीने के बाद जो नेक्स्ट एडिशन आता है ना, उसमें चेंजेस आते हैं इंट्रोड्यूस करके. पर हम लोग क्या है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इतने सारे चेंजेस. अरे भाई स्टडी मटेरियल है, नया नया सिलेबस आता है, टाइम तो लगेगा ना. क्या ऐसे क्या इंसान पूरा मटेरियल बनाने को कितना टाइम लगता रहेगा, ये सोचो एक बार. और अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कॉपी पेस्ट करते हैं. ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं. ये बातें बतानी पड़ती है, कुछ बच्चे बहकावे में आ जाते. बेटा विजय गौरव, एक बार प्राइवेट क्लासेस के फीस देख के आना. आप बोलो बुक्स का पैसा लेते हैं, मतलब आपको क्या बोलना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे. क्या बोलते हो आप लोग यार? यू आर गेटिंग दिस डिग्री एट वेरी अफोर्डेबल फीस फॉर विच यू आर गोइंग टू अर्न. इफ यू हैव सीए डिग्री, यू आर गोइंग टू अर्न मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ. इतना आपको मिलने वाला है. कौन सी डिग्री है भाई? 9,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है आपके. यस चलो, ये चीजें बोलना जरूरी होता है कभी कभी. चलो इलस्ट्रेशन 3 पे आइए, बाकी बाद में हम लोग करेंगे एक बार इंस्टीट्यूट के बारे में. हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3.
और बोर्ड ऑफ स्टडीज की फैकल्टी ने ये लिख भी दिया रहेगा जेएफ कॉलम लिखना है करके, और नहीं होगा तो हम लोग करवा देंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3। विजय, आपने बहुत गलत बात बोली है, मुझे थोड़ा मन को हर्ट हो गया। बुक्स का पैसा लेते मतलब, ठीक है, अभी क्या बोल नहीं सकते इसके ऊपर। चलिए, द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस। तो मिस्टर एस के बुक्स है, किसके बुक्स है? मिस्टर एक्स के बुक्स। हु इज द ओनर विद द रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट्स। 2 पर्सनल अकाउंट्स हैं, Mr. H and R. Okay, now please, this is a very important question. Mark it as IMP question. Mr. H and Mr. R. Now, question is, Mr. S owes Mr. R rupees 15,000. Owes. Owes means पैसा देना वाला है, देना, पेबल। Owes means Mr. S is payable to Mr. R. To him is payable, so R को क्रेडिट बैलेंस होगा, देना, क्रेडिटर। R will be creditor. Okay, owes का मीनिंग होता है पेबल, payable. Okay, so A is payable to R. In simple language, S is payable to R. तो S के बुक्स में R कौन हो जाएगा? He is a creditor, 15,000. Now you got the concept. और सिंपल हिंदी में बोलना है तो S देने वाला है पैसा टू R, तो S के लिए क्या होगा बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ओके सर, वी गॉट दिस। ओके, अरे वाह विजय गौरव, वेरी गुड। जो इंसान अपनी गलती का एहसास करता है वही करेक्ट इंसान है। और उसने आई एम रियली सॉरी ऐसा लिख दिया। यस बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे कमेंट्स मत मारो। ऐसे आपके भले के लिए सब कुछ कर रही है, ये डिग्री बहुत कुछ देने वाली है इन फ्यूचर, यदि डिग्री मिलती है तो। कोई भूखा नहीं है हमारे डिग्री में, इतना याद रखो। H owes Mr. S. Now H owes Mr. S मतलब H देने वाला है पैसा S को। हम लोग तो भाई S के बुक्स देख रहे हैं, वी आर थिंकिंग फ्रॉम S बुक। सो H will payable to S. It means S is receivable. S will receive amount from H. Okay, so H is a debtor. H is a debtor for S. We are doing entries in the books of S. Okay, so yes beta, so write down beta, books of S, beta R account, half page करो, half page, columns are हाफ पेज का कॉलम बनाओ, चलो फटाफट। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू बेटा बहुत सारा होमवर्क टिल ट्यूसडे। सो होमवर्क देने वाला हूं आज। आई वांट टू टेक मैक्सिमम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आपको 2 होमवर्क आज मिलने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडियरी बुक्स। बोथ होमवर्क आपको कंप्लीट करने हैं। सो आई विल फोकस ऑन, नाउ यू ओनली टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, should I take only study material question which already I covered? So you have 2 options. I already wrote this beta. Today also I am going to ask you option number 1. I will take study material question. Study material means जो आपके हाथ में मॉड्यूल आपका, take study material question already taken in batch 5. Already batch 5 में cover हुआ है. Option number 2, should I take extra questions and homework to watch batch 5 lectures?
बैच 5 के लेक्चर्स वॉच करना एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करना. So you only tell me two options. Whatever, yes, I will go with majority who are watching my regular lectures. तो आप लोग मुझे बताइए, होमवर्क टू वॉच बैच 5. आई विल टेल यू स्पेसिफिकली कौन सा लेक्चर देखना है. ओके, स्पेसिफिकली आई विल टेल यू फॉर ऑप्शन नंबर 2 which lecture you have to see, and extra questions I will take it in the class like our intermediate batch. So intermediate batch हम लोग अभी ऐसा ही कर रहे हैं. Okay, all are saying beta option number 2. Yes, yes, yes. Very good, beta. Very good. So we will go by. No one is saying sir option number 1. Not a single student. Pramod ji, thank you. You know what's good for us. Whatever you take, it's for our betterment. I am your pure follower. Very good, beta. अरे विजय, ओके बेटा, ठीक है विजय, इट्स ओके. कुछ नहीं होता, आपने गलती नहीं की है. यस. ओके, एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन 2. चलो, so books of S are account. I know your daily schedule is very hectic schedule. So next time मैं आपको पहले से ही बता के रखूंगा, अभी ध्यान में रखना. हाँ, रेक्टिफिकेशन की आई हैव टू टेक प्रैक्टिस बिकॉज आई एम विथ यू टिल 13 बेटा. 13 के बाद फैकल्टी विल गेट चेंज. सो 15 से न्यू फैकल्टी आ जाएगी, या 16 इज माय लास्ट सेशन आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली. तो उसके बाद बीआरएस, इन्वेंटरी एंड डेप्रिसिएशन, ये अनदर फैकल्टी विल कम. फिर उसके बाद मैं वापस आपके मेन चैप्टर्स जब होंगे, 6 नंबर चैप्टर कंपनी अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप, उसके लिए मैं वापस आ जाऊंगा. डोंट वरी. ओके, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी एंड यू वांट माय सब्जेक्ट पूरे के पूरे हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में चाहिए तो आपको पुणे ब्रांच को कांटेक्ट करना है. पुणे ब्रांच विल गिव यू एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस. वो गूगल ड्राइव के लेक्चर्स देते हैं जिसमें आपको मेरे सभी सेशंस मिलेंगे विथ रिवीजन. तो आप पुणे ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हो. वेरी अफोर्डेबल फीस, इज नॉट प्राइवेट क्लासेस. ओके, मैं पहले ही बोलता हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी प्राइवेट क्लास, आई एम एसोसिएटेड विद पुणे ब्रांच. तो पुणे ब्रांच वालों को वो लोग मुझे जो भी अमाउंट देते रहेंगे, बाद में वो लोग आपको शेयर कर देंगे पूरे के पूरे गूगल ड्राइव के लिंक्स, बट इट्स इन हिंदी. तो ये प्योरली हिंदी में रहेंगे, इतना याद रखिए. चलिए, तो बुक्स में आर सोल्ड गुड्स, कौन है बेटा? आर सोल्ड गुड्स टू एच. हाँ हाँ हाँ, आर सोल्ड गुड्स टू एच 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट. अरे सर, ट्रेड डिस्काउंट यू नेवर रिकॉर्ड ना. ट्रेड डिस्काउंट यू नेवर रिकॉर्ड. सो you can write over entry over there, R2 sales. But at what amount, beta? 54,000. At what amount? 54,000. So R account debit to sales account 54,000. So R चा debit ला. You can write now. Yes. दो अकाउंट निकाले क्या आप लोगों ने? R account एंड H account निकाला. हाफ ऑफ पेज डेट पर्टिकुलर्स. क्या कर रहा हूं मैं? हाँ. So R account half page. यस बेटा आर्श. बेटा आपका क्वेश्चन क्या है? आंसर मुझे क्वेश्चन नहीं समझा बेटा आर्श. आपका फाइनल अकाउंट में नहीं लूंगा अभिषेक, सॉरी. आर अकाउंट. चलिए, सो आर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एस. सो बुक्स ऑफ एस लिखा, लेजर बना लो ना फटाफट. डेट पर्टिकुलर्स जेप, ये कौन बनाएगा? डेट पर्टिकुलर्स जेप रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जेप रुपीज. देन बेटा सेम थिंग फॉर एच अकाउंट.
Date particulars JF rupees, date particulars JF rupees. Half page, half page. Journal entries you can write on question itself. हाँ, आर के क्रेडिट में चलो जल्दी से ओवर ओवर ओवर. हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा ना हमारा. आर को क्या लिखेंगे बेटा? Yes, what we are going to write in R's account? 1st April by balance brought down. Draw fast. You don't have to write date particulars J always. On the top of the page. On the top of the page, you have to write it. By balance brought down. How much? 15,000. And two balance brought down. A debit balance che. Two balance brought down ketla? 20,000. 15,000 and 20,000. Two balance brought down is 20,000. So do ICI conduct offline lectures? Beta Aditi, Pune branch is conducting offline lectures. You can join if you want. तो अलग से टाइमिंग्स रहते हैं उसके डेली बेसिस पे. चलो हो गया क्या ओवर बेटा? नाउ यू आर प्रो बेटा उमर. So don't write amount first. You can write particulars first. It's for single entry. हाँ, डबल एंट्री कंपाउंड एंट्री के लिए आप लोग लिख सकते हो, बट फॉर बेसिक एंट्री बेटा देयर इज नो नीड ना. ओनली टू अकाउंट्स यू आर आस्क. ओके. आर सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो बेटा आर को डेबिट दिया. आर को क्या दिया? डेबिट. आर को डेबिट बाय 54,000. सो आई विल गिव सेकंड लाइन बेटा. सेकंड लाइन. हाँ, यस. Two sales. 54,000. Two sales. 4th April. तो गुजरात में ऑफलाइन बैच है क्या बेटा? आपके रिस्पेक्टिव आईसीआई में. मैं नहीं फैकल्टी रहूंगा. हाँ, इतना देखिए, रिस्पेक्टिव आईसीआई ऑफलाइन लेते रहेंगे तो हो सकती है फैकल्टीज. आई डोंट नो एग्जैक्टली. जानवी जी. So R2 sales 54,000. Oh, sorry. It's my mistake. Cut karo. IMP. Sorry. R sold goods to S. So it means S is purchasing goods. Sorry, it's my mistake. R sold goods to S. Okay. So S is purchasing goods. So वो बात करने के इसमें मैं अलग ही बोल दिया. सॉरी. तो एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आर. राइट डाउन प्रॉपरली. परचेसेस टू आर. सी आर सोल्ड गुड्स. इट मींस एस परचेस गुड्स था. हाँ, एस ने गुड्स परचेस किए. WRO वाले. यस, ऐश्वर्या ने इमीडिएटली बताया. सर मिस्टेक हो गया. ओके, गलती से मिस्टेक हुआ बेटा. सो एस परचेज गुड्स. सो आर अकाउंट को क्रेडिट करना है 54,000 बाय परचेसेस. ओके सर. 4th April. नाउ इट्स करेक्ट बेटा. नाउ इट्स करेक्ट. चलो हो गया. एस सोल्ड टू मिस्टर एच गुड्स प्राइजेस रुपीज 30,000. नाउ एस सोल्ड. हाँ, एस सोल्ड किया. ओके, एस सोल्ड किया. ओके, सो एस सोल्ड. H, what is the entry beta? What is the entry? H to sales 30 रहे. It's very simple. H to sales 30. Debt 5. 5th April. 5th April is the date. Sir, in Karnataka, is there any offline classes? No, but I really don't know. I know in only Maharashtra where I am taking my offline classes.
So you can contact to your nearest branch if they are taking these classes, better offline classes. Then I really don't have any idea. But one mode I can give you, it's a Zoom mode. तो आप लोग उसमें पुणे branch को contact कीजिए. You will get this information. Okay. Record of purchases 25,000 net from R. So R से purchases किया है. किससे purchase किया? R से purchase किया. Okay, sir. Now 25,000 and sold to H at a profit of 15,000. See, anyone is purchasing at 25,000 and he will sell it at 40,000. Profit add करेंगे ना बेटा. So what is the entry? Purchase to R. Purchase to R. You can write purchase to R 25K and H2 sales 40K. Purchase to R means by purchase. कितने में परचेस किया रे? 25,000. R को क्रेडिट किया ना. ओके, सो दिस इज डेट क्या थी? 17 थी. एंड H को कितने में बेचा? 17 को ही. सेम गुड्स वी सोल्ड इट एट 25,000 प्लस आवर मार्जिन रे 15,000. 40 में बेचा. H2 सेल्स. H2 सेल्स. एकदम इजी છે. एकदम इजी છે. ओके. हाँ. S rejected goods which are purchased on 4th April. बेटा 4th April को जो गुड्स परचेस किए थे ना, हाँ वो रिटर्न किए. कितने का परचेस था सर? 54,000 का. कितने का परचेस था? 60,000 माइनस 10%. 54,000 का परचेस था. नाउ यू रिटर्न इट. सो बेटा परचेस रिटर्न. परचेसेस को डेबिट बैलेंस. सो परचेस रिटर्न क्रेडिट and R account is debited. R account debit to purchase return 5,400. 10%. 5,400. R च्या डेबिटला to purchase return 18th April. S issued a cash memo. But a cash memo. See, what is cash memo? Cash memo means there will be no party account which is open. So you sold it in cash. Okay. So Mr. S issued cash memo to Mr. H, who came personally for his consignment of goods urgently needed by him. So beta, it is not routed through party. Only cash account and sales account. So party का कोई सवाल ही नहीं आएगा ना. No party is involved. Party means H or S. H or R are not involved, beta. It's not on udhari, not on credit. So not on credit is cash memo. Okay. So you don't have to pass this entry through account. Directly cash मिला. Directly क्या मिला? Cash मिला. हाँ, समझ में आया बेटा? Yes. Now, H cleared half of his total dues. Wait. Now we are going to calculate it. Enjoying 0.5% cash discount and 20,000 paid by check. Sir, wait. Sabar karo. Sir, H cleared. H is our debtor, sir. H is our debtor. He is our creditor. Huh? He is our creditor. R is our creditor. H is our debtor, sir. Okay. Sir, कितना अमाउंट था? See the amount. Yes. Now tell me, Mr. H को कितना अमाउंट था? Tell me fast. H से कितना पैसा लेना है? चलो, who will answer? Who will answer बेटा? Who is answering? H से कितना पैसा लेना है? 20, 30, 40. So amount to be taken from H 90,000. Write down on module itself.
90,000 is a total amount. उसका कितना रे? हाफ, हाफ 45,000 क्लियर्ड. सो बैलेंस कितना है? 45,000. बैलेंस इज स्टिल 45,000. हाँ, उसमें से 45,000 पे 0.5% कैश डिस्काउंट. चलो लीजिए कैलसी पे 45,000 इंटू 0.5%, 225. So this is discount allowed. This is discount allowed. We allowed this discount. Now he's a debtor. He's our debtor. So it's our loss. He will pay 225 less amount. कितना कम पे करेगा? 225 less amount पे करेगा. Full focus कीजिए. Full focus. 45,000 उसके ऊपर 0.5% कैश डिस्काउंट. So 225 is our loss. Okay. Then 20,000 बैंक चेक दिया उसने. बैंक चेक दिया ना, चेक आया तो routed through bank. And what is the balancing figure? 45,000 minus 225 minus 20,000. Sir, 24,775 he paid us cash. Comes in. Easy che? Okay. So I will write now on the second line, buy cash, red pen beta. This is important one. Red pen se likho. Buy cash 24,775. Sir, buy bank 20,000. So by discount allowed. So discount allowed કેટલો છે? Discount allowed કેટલો છે? Discount allowed is 225. So 225. 22 तारीख, 22 April, 22 April, 22 April. 22 April, by cash, by bank, by discount allowed. It's very, very simple, sir. We got this. Very easy. Oh, over. Now, our total dues less 10,000 held back. 10,000 held back means balance carried down. Were cleared by check. Okay, we cleared his amount and discount received is our gain, cash discount. You can write, we got a cash discount. Okay, so R का account. R के account में आइए, R के account में last line red pen. Two balance carried down. 10,000. 30th April. 30th April. Okay. Carried down. And on 26th April, to bank, बेटा check given. कितने का check दिया? To bank, we are not aware. It's a balancing figure. And same line, same side, to discount received 1,000. Now tell me the balancing figure. His account is closed. Okay, 15 plus 54 plus 25, 94,000 minus 5.4 minus 1 minus 10. 76,600 रे. कितना? 77,600. हाँ, 77,600. 77,600. Yes. 77,600. Can write now. Two balance carried down. 77,600 is a balancing figure. Easy है? अरे easy है क्या? And now, buy balance carried down 30th April. हाँ, H accounts to record facts
all 5,000. Fact that all but 5,000 was not cleared. Beta either printing mistake hai. Was not cleared by him. Was not cleared by him. Okay. ये printing mistake हुआ है. So was not cleared by him. Okay. So 5,000 not cleared. So 5,000 is beta called as bad debts. And remaining by check means bank. 40,000 का बैंक में से चेक आया. ओके फॉर बैलेंस 45,000. सो बाय बैंक एच अकाउंट बेटा एच अकाउंट बाय बैंक 40,000 एंड बाय बैड डेट्स 5,000. 29th. By bad debts 5,000. By bank 40,000. By bad debts 5,000. This is all for each account. Here we have completed each account. By balance कट डाउन आएगा ही नहीं ना 90,000 आएगा ही नहीं. By balance कट डाउन कट कर दो. By bank and by bad debts over each account fully completed. And then our account also fully completed. Easy है? चलो take a break. Yes, beta Kazi, this sum is thoda sa difficult, but now after explanation, it's easy. Now we are going to start with trial balance after this session. After the break is of 10 minutes और break के बाद हम लोग आएंगे 2 चैप्टर्स हमें करने हैं सब्सिडरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस. सो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस और हम लोग अभी ब्रेक के बाद थोड़े से पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी ले लेंगे. सो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उससे. ओके चलो ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्योरी. थ्योरी एक्सप्लेन करने के बाद प्रॉब्लम्स के लिए आपको पुराना लेक्चर कौन सा देखना है ये मैं बता देता हूं. थैंक यू. टेक अ ब्रेक.
We have completed journal and leisure chapter. We'll make sure that you will solve some past examination questions. I will show you the theory. So in practical question in December 21, you got one question on journal entries. Still, there is no question on leisure accounts, no question on trial balance. In practical question, you have one question on trial balance. Yes, you have one question. So journal entries, we can see this is a bill of exchange entries actually. So sorry. This question we'll see it in the bill of exchange. You do not have any practical question till now on journal entries and leisure accounts. But remember, without journal entries and leisure accounts, you cannot start other chapters. Okay. So these are basic fundamental chapter. Though you are not getting any question on this chapter, but it will make sure that your basics will be 100% clear if you read and learn chapter journal and leisure. So don't skip this chapter in option. Otherwise CA course will be in option. Okay. तो जर्नल एंट्रीज और लेजर तो आपको आनी ही चाहिए पास करने को. चलो, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रायल बैलेंस. किससे साथ शुरू करेंगे अभी? Will yes, your TYK1 is your homework. It's very simple question. TYK1. Some students requested me to show the index. Yes, beta. Only for you. Index. Yes, see index, beta. Index. You can take a screenshot. First account is a stationary account, which is very simple. Open various ledger accounts. Second question we already covered. Ledger numbers 1 to 8 as per opening balance, and then 9 to 16 as per journal entries. So 9 to 16 journal entries के हिसाब से गए. For ledger posting, first write amount and then particulars. Some important tips for solving questions. Nominal accounts are transferred to trading account and P&L account. Real and personal accounts carried to balance sheet. But here only balance carried down. Remember, any account nominal, this is better because we are not preparing any financial statements. So for understanding purpose, we have done only balance carried down, balance carried down, balance carried down. Books of S and books of S, you have two accounts, S payable to R. So R is creditor and H is payable to S. So S is receivable from H. So therefore H is a debtor. Transaction numbers are given list below. R account 10,000 held back means it's a balance carried down. Okay, it's a balancing figure. R sold goods means to S. हाँ, ये जो मैंने गलती किया था ना, think from S angle. So for S it is purchases. R sold means S के लिए वो हो जाएगा purchases. And for cash memo, we are not passing any entry. So these are some basic important points while solving your illustration. So take screenshot of this and you can write it later. Screenshot लीजिए और इंडेक्स को कंप्लीट कीजिए. इंडेक्स को कंप्लीट कीजिए. Now we are going to solve trial balance questions. Any difficulty till now? Yes. Any difficulty? If you want to ask me some questions, you can ask me. I'm giving you 2 to 3 minutes. बेटा मेघना, प्लीज आप मेरा सेशन जो है वापस देख लेना. वी हैव अ ह्यूज सिलेबस. सो बेटा मुझे रेक्टिफिकेशन पे भी जाना है. सो आप जल्दी से बाद में देख लीजिए. Over. If you have any question, you can ask me. Kashish is saying no, sir. Kashish Bagri. CRO वाले वर्णिका जी बोल रहे no, sir. We do not have any other question. बाकी स्टूडेंट्स. Okay. Cash memo beta means party is not involved. If you take something, yes बेटा महक रॉय जी समझ लीजिए. महक क्या होता है बेटा, आप मार्केट में जाते हो. फॉर एग्जांपल डीमार्ट में आपके इधर बेटा, आप कहाँ से हो? ईआरओ की स्टूडेंट दिख रही है, तो कहाँ से तू? हाँ, तो बेटा डीमार्ट
जो होता है, तो आप डीमार्ट में जाके बेटा कभी उधारी पे माल लाते हो क्या? नहीं, तो कैश पे माल लाते हो। और जब भी कैश पे माल आते हो ना, तो उसको कैश मेमो बोला जाता है। और कैश मेमो में पार्टी का नाम नहीं लिखते। पार्टी अकाउंट क्यों ओपन करने का? कैश मिला, कैश सेल्स, ओके। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई खाने के लिए आया होटल में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कैश में माल बेचते हैं। तो वो होटल में खाना खा के हम लोग पार्टी का नाम क्या याद रखें? हम लोग पार्टी कब ओपन करेंगे? जब उधारी होती है। तो बिल्डिंग के कुछ लोग आते हैं खाने के लिए, तो हम लोग उनका अकाउंट मेंटेन करते हैं, ओके, जो महीने के एंड में सेटल करते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो कैश मेमो मतलब कैश में ट्रांजेक्शन, तो कौन आके गया हमें क्या लेना देना है ना, उसके लिए इसको बोलते हैं कैश मेमो। तो हम लोग ये एंट्रीज कैश में कर देते हैं। चलो, सिमरन बोल रहे हैं नो क्वेश्चंस, इट्स ऑल क्लियर, थैंक्स टू यू। उज्जवल बोल रहा है आयुषी नो क्वेरीज, नो क्वेरीज, नो क्वेरीज। और आदित्य बोल रहे हैं मुझे एक टीवाईके में डाउट है। कौन से टीवाईके में डाउट है? बड़ा एक टीवाईके में डाउट है, आदित्य का डाउट ही सॉल्व कर लेते। यार बड़ा डाउट क्या है वो? आप सिर्फ डाउट है बोल रहे हो, पर कौन सा डाउट है नहीं बता रहे हो। चलिए। तो अभी फर्स्ट थिंग, यस, मेरे साइड से एक गलती हो गया कि मैं यूट्यूब का लिंक कौन सा है ये आपको पूछता हूँ। यस, यूट्यूब का लिंक आई विल टेल यू एग्जैक्टली। कौन सा सेशन है एनीवन ट्रायल बैलेंस के लिए? बैच आईसे ट्यूब पे जाके आई विल सर्च बैच नंबर 5। वीडियो से बदले प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट इन आईसीए ट्यूब। प्लेलिस्ट को आप टाइप कर सकते हो, एंड उधर है फाउंडेशन लाइव कोचिंग क्लासेस बैच 5। बैच 5। बैच 5 में मैं आपके लिए सिर्फ लेक्चर फाइंड आउट कर रहा हूं। हाँ, लेक्चर है 16 जुलाई 2022। 16 जुलाई 2022 का लेक्चर देखिए। 16 जुलाई 2022, ठीक है। 16 जुलाई 2022 का लेक्चर देखिए। फॉर ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक्स। फॉर ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू थ्योरी, फटाफट फटाफट, and we will solve some examples. Okay, today I am going to tell you the theory of trial balance, subsidiary books also, and cash book. Cash book ले लेंगे। Now do one thing. Yes बेटा। Now chapter 2 100 पेजेस के नोटबुक में आ जाइए। 100 पेजेस नोटबुक, 100 पेजेस नोटबुक। Chapter 2, write down chapter 2, accounting process, theory notebook,
Unit 3, trial balance. Unit 3, trial balance. Write down. July 2022 का सेशन देखना है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, just 3 months back. नवंबर बैच बहुत जल्दी चालू हो गया था इस बार. Okay. Chapter 2, accounting process. Unit number 3, trial balance. Have you written, beta? 100 pages notebook. Please write it. अच्छा, आदिति जर्नल में सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स. चलो, यूनिट 3, ट्रायल बैलेंस. राइट डाउन मेथड्स. राइट डाउन मेथड्स. टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, total and balance method. Total method, balance method, and total and balance method. Trial balance में. इधर लिखो statement and not account. Statement and not account. Remember, trial balance is not a statement. It's an trial balance is a statement, not an account. Okay, it's not any account. It's a statement. Trial balance gives arithmetical accuracy. See the word arithmetical accuracy and not 100% assurance of correctness of books of ledger accounts. So what it means? So trial balance tally means our books are tally. No, my friend. There are some errors which are possible. For example, if I sold goods to Mahesh, but I have written in the books of Ramesh, महेश के बदले में रमेश को डेबिट दे दिया, ट्रायल बैलेंस इज गोइंग टू टैली. What is exactly trial balance? Understand. Trial balance means in ledger accounts. In trial balance, ledger accounts, we got some beta balances. Balance carried down, balance carried down, balance carried down. So trial balance is a summary of these balances. Trial balance मतलब इसकी क्या है? It's a summary. For example, number 1, if I am writing any asset, मैं कोई asset if I am writing, in that case, yes, you can write this. चलो, ये लिख लो, ये लिख लो. Trial balance. How to prepare debit, credit, particulars. So this is a presentation style. Particulars, debit, credit. If beta you have any asset, it will always show debit balance. Any asset, furniture, fixture, data, current asset, fixed asset, any asset. Current assets less than 1 year. Fixed asset more than 1 year. So any asset you are going to record it on the debit side. कहाँ पे record करने वाले हो? Debit side पे. बेटा liability. Where to record this? On the credit side. On the credit side. Third one, expenses. On the debit side.
expenses on the debit side, and income I'm going to record on the credit side. इनकम में क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा. एंड 5 नंबर पे कैपिटल I will record it on the credit side. And same thing now, total is going to match. Total is going to match. It is called as trial balance pro forma. So this is pro forma. Format. Pro forma means format. Format of trial balance. Easy, Jay? So you got the concept of trial balance. Trial balance means summary of ledger accounts. What it means? Summary of ledger accounts. So ledger accounts की summary जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं trial balance. सर इतना इजी कुछ है ही नहीं सर. निहाल जी क्या पूछ रहे हो, मुझे तो समझा नहीं. LIC क्रेडिट डेबिट, LIC क्या है? पर्सनल है. सो पर्सनल इज कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट. ओके. सो पर्सनल इनकम होगा तो बेटा कैपिटल होगा. और यदि आपने LIC का हफ्ता भर दिया तो फिर वो डेबिट में आएगा. इट्स अ ड्रॉइंग्स फ्रॉम बिजनेस किया तो. LIC कैसे आता है, मतलब मुझे समझे नहीं आप क्या बोल रहे हो. ओके. Now, beta, yes, this is a summary of trial balance. Now I will tell you the logic of trial balance. Logic समझ लो. Now suppose if I open debtors account. Now what is the pro forma of debtors? Debit plus, credit minus. See the pro forma. Yes, beta. When debtor arises, tell me it in comment section. When sales is there or when purchases is there. Debtor कब आएगा? Yes. Debtor कब आएगा बताओ? Debtor कब आएगा बताओ ना? When there is a, yes, वर्णिका ने बोला sales. So debit side means there is some balances, beta, 2 balance brought down. So see the pro forma. I will tell you. Suppose 2 balance brought down 1000. This pro forma is very important. Whether can you visualize this ledger account? See, to sales, I sold goods for 5,000. To sales 5,000. By cash, till now I received 2,000. By discount allowed 500. By bad debts 1,500. By sales return 500. So by balance carried down is balancing figure. This is 6,000. So by balance carried down beta 1500. Okay. So beta, when sales is there is a debtor. So this is a pro forma. So pro forma याद रखो. 2 balance brought down to sales by cash. So daily basis पे ये pro formas याद कीजिए. 2 balance brought down to sales by cash, by discount allowed, by bad debts, by sales return, and by balance carried down. तो you can write this pro forma. चलो pro forma लिख लो pro forma. Debtors का pro forma लिख लो. चलो आज मैं आपको 4 pro forma सिखाऊंगा. Debtors, creditors, expenses, income.
ओके, प्रोफॉर्मा 4 सिखा देता हूं इन ट्रायल बैलेंस ही। ओके, सो दिस प्रोफॉर्मा। अभी टोटल मेथड होगा, टोटल मेथड। तो डेबिट, क्रेडिट, and here is debtors. So in total method, how to post? On debit side 6,000, and this is a total of debit, and credit की total कितनी है? 4,500. This is a debit total method. So total you will write 6,000 and 4,500. So automatic difference, automatic कितना difference आएगा? Difference 1,500 automatic, huh? But balance method, debtors 1,500. So balance method में you have to write only difference 1,500, 1,500. Okay, so 1,500 difference if you are writing, it is called as balance method, and if you are writing beta 6,000 and 4,500, so it's a debtors method, total method. Have you written? So you got the difference between debtors and creditors. Now, yes, thank you Ayushi Botra. So your teaching way is so easy. बेटा ऐसी comments अच्छी लगती है बीच बीच में. Creditors. Creditors, बेटा now next pro forma. Creditors account. Now you only tell me the pro forma. Creditors account. चलो creditors का pro forma बताइए. आप सोचिए. What plus and what minus? What is plus and what is minus? What is plus and minus? चलो 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 चलो. Yes. Then you will tell me the answer for total method, and yes, I will write some amounts for you. Creditors का pro forma. चलो चलो चलो. You only tell me. अच्छा, कमेंट्स जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ रहे? क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस. सो बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ महक रॉय हैज रिटर्न टू परचेस. बेटा टू परचेस होगा क्या? यू स्टार्टेड विद बाय परचेस ना बेटा. बाय परचेस 1,000, 8,000, 1,000 and 8,000. To cash 3,000. To discount received 1,000. To purchase return 500. And to deficiency. बेटा deficiency होता है. We have not paid any amount. Not paid the amount. It is called as deficiency. And when you not received amount, it is called as bad debts. Not received, bad debts. Not paid. हमने किसी का पैसा डुबाया बेटा. No bad debts. Deficiency. पैसा नहीं था मेरे पास. इसको बोलते deficiency. इसको क्या बोलते? Deficiency. Okay. So deficiency, assume 500. So two balance carried down. Now you solve it by now you tell me by total method and balance method the answer.
टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड. चलो. बेटा डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल. Credit 9,000, debit 5,000. And in balance method, only 4,000. So this is total method and balance method. Write down. चलिए. So I hope you are clear. So friends, today I'm going to tell you very, very important concept. Please, now next 20 minutes are really very important. So please make sure that you will understand each and every concept, because now I'm going to explain you adjustment entries in trial balance. Adjustment entries से ज्यादा इसको हम लोग बोलेंगे closing entries. What you will call it as closing entries related to expense, payable and prepaid expenses. Please make sure now next 25 minutes you will understand each and every concept thoroughly for closing entries. Subsidiary books you are going to watch in batch number beta 16 July 2022 ka session, and this lecture is very important because I'm going to explain you expenses and income receivable now and received in advance. See beta, this is closing entry. Why we have to follow this? Because we are follower of accrual concept of accounting. We are follower of accrual concept. See, this part is not only needed in this chapter, but it is your future chapters. All CA final tak nahi, in life also, real life, payable, prepaid, receivable and received in advance are very, very important concepts. Okay. So expense payable and prepaid, ये आपको याद रखना पड़ेंगे. So write down this closing entries. Yes, have you written this? Beta closing entries. Now today in this session I'm going to explain you only expense part. So expense part आपको आज मैं explain करूंगा. I will give you some homework. Then prepaid expenses भी हम लोग आपको मैं explain करूंगा. And then
receivable received in advance will be in the next session. Okay, so I will give some homework for expenses. So everyone is ready. बेटा मुझे अभी 100% फोकस चाहिए है. I want 100% फोकस क्योंकि अभी का जो सेशन है ये लाइफ टाइम का इंपॉर्टेंट सेशन है. एवरीवन, एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो पूरा समझ में आया. चलो जल्दी से बताओ. चलो फोकस कीजिए. क्लोजिंग एंट्रीज, एक्रूअल. रितु तिवारी, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होने के बावजूद कुछ फर्क नहीं पड़ता. उल्टा सबसे बेहतरीन बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं जिनको जीरो नॉलेज होता है. सो आपकी कमेंट बेटा, सर अकाउंट्स लाइक फिजिक्स फॉर मी. थैंक यू सर फॉर सुपर टीचिंग. बेटा मेरा 4th डे आज आपके साथ, 4th या 5th डे है और आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया. चलो तो अभी मुझे 100% फोकस चाहिए. राइट डाउन दिस एग्जाम्पल. सो आई एम स्टार्टिंग विथ concept of expense payable. Concept one here, expense payable. Write down. Concept one, expense payable. Yes. चलो अभी मुझे next 20 minutes full focus. Write down one example. First year salary rupees 10,000 per month. First year salary rupees 10,000 per month. And second year salary rupees 12,000 per month. Okay, write down. First year की सैलरी 10,000 per month. Second year की सैलरी 12,000 per month. Normally, salary is payable or salary is paid in next month. Salary is paid in next month. Prepare salary account. Beta, this is very important example. Note down this. For first year and second year. Financial year, April to March. So you start on 1st April and you end on 31st March. Yes. Tell me over after writing this example. After writing this example, please tell me over. 100 pages notebook. Ayushi, 100 pages notebook में लिखना है. Over? Yes. Answer. Write down answer. Now see, for understanding, beta, for understanding. For understanding, I am giving you one lines beta, कुछ explain करता हूं. See beta, months, you can write months here. April, just write initial. May, June, July, August, September, October, November, December. Don't write all full names beta. February and March. It is only for understanding. Months.
how many columns you are going to prepare? Yes, I will tell you how many columns that you are going to prepare. So you are going to prepare April. Okay. Now here I will prepare two columns. First year, incurred and paid. And second year, incurred and what is paid. Okay. So how many columns I'm going to prepare? फर्स्ट ईयर में इनकर्ड कितना एंड पेड कितना, एंड सेकंड ईयर में इनकर्ड कितना एंड पेड कितना. इनकर्ड मीन्स खर्चा. व्हाट इज इनकर्ड मीन्स एक्सपेंडिचर फॉर दैट मंथ, बट हाउ मच यू पेड is a different column. So incurred here is not equal to paid because you are not paying in the same month. You are paying in the next month. Correct hai? So incurred. Beta, first year 10,000 is incurred in all months. So all months salary is 10,000. $10,000, $10,000, $10,000, $10,000, $10,000, $10,000. So salary is 10,000 for all 12 months. So you incurred 12 months into 10,000. How much beta? 1,20,000. 1,20,000. But tell me, are you going to pay salary of 10,000 in the same month? No. So in my April month, in the first year, you won't pay any salary. So you will pay this salary 10,000 in the month of May. May salary in the month of June. You can draw like this, arrows, at least for first 3 months. June salary, you are going to pay it in July. So on. So beta, tell me, how many months ki salary you are going to pay? How many months ka salary you are going to pay in the financial year, first financial year? How many months, beta? How many months? Yes, you only tell me. How many months ki salary you are going to pay? Yes, tell me it in comment section. Who wrote the fast answer, beta? वर्णिका. वर्णिका ने सबसे तेज आंसर दिया. CRO की वर्णिका. सर 1,10,000. 11 months salary. 11 months into 10,000. So still रेड पेन से मैं लिखूंगा, yes, 1 month salary of March महीना 10,000 is still payable. Sir, it is still payable. कौन से महीने का सैलरी स्टिल पेबल? मार्च महीने का सैलरी. ओके सर, वी अंडरस्टूड. सर इनकर्ड ये जाता है, रेड पेन से लिखना, P&L, एंड पेड ये कैश में जाएगा. पेड किधर जाएगा? कैश में. सर, सो इफ आई ओपन रेड पेन ओनली, salary account pro forma. Salary account pro forma, debit plus credit minus. Salary to cash. How many months, beta? 11 months. To payable. Beta, only to cash, 1 month is still payable. So 1 month is payable. It's a March month payable. मार्च महीने का अभी भी पे नहीं किया, और आपने अप्रैल का, ये कौन से महीने का पे किया है? अप्रैल टू फेब्रुवरी
पेड इन मई टू मार्च, अप्रैल से फरवरी का सैलरी यू पेड इन मई टू मार्च। सो फरवरी तक का सैलरी आपने कब पे कर दिया? मई टू मार्च। सर 11 मंथ सैलरी एंड 1 मंथ सैलरी स्टिल पेबल and by P&L, sir, by P&L incurred all 12 months. So you can match 11 with 12. It is 10,000. Now you can write it 10,000, 10,000. Your account is going to tally 1,10,000, 10,000 and 1,20,000. So see, your kharcha, your expenses is 1,20,000. This is your expenses. But this is your liability. But out of this, you paid only 11 months and 1 month is still payable. So this is salary account for first year. Salary account for first year. You can see this is tallying. Credit is matching with debit. Debit is matching with credit. 11 months का you paid, 1 month का is still payable and 12 महीने का you incurred. एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं. It's very simple. Yes, understood or not? Tell me it in comment section. चलो जल्दी से comment section में बताओ. Yes बेटा, salary pro forma you understood. Expenses का pro forma जा रहे हैं हम लोग. Expenses pro forma. It's easy or difficult? Beta, most important thing in your future CA life, ये सबसे important है. Payable and prepaid. यही बच्चों को समझता नहीं. फिर बच्चे बहुत नाराज होते हैं कि नहीं समझता, अकाउंटिंग नहीं समझता. This is only the reason. Payable और prepaid नहीं समझता. और जिसको ये समझ में आया ना, उसको क्लोजिंग करना आया. बड़ा एंट्री करना आसान है. क्लोजिंग चल रहा है अभी. वी आर क्लोजिंग अवर अकाउंट्स. दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एंट्री. दिस इज अ क्लोजिंग एंट्री. टू पेबल. टू पेबल वाउचर से नहीं समझता. टू कैश के मेरे पास पेमेंट के वाउचर्स होंगे. मैंने जिनको सैलरी पे किया उनका मैं ठप्पा लेता हूं, साइन लेता हूं. पर जिनकी सैलरी अभी भी पे करना बाकी है, उनका ठप्पा किधर है बेटा? पे करना तो बाकी है, पर ये हमें एंट्री पास करनी पड़ती है ड्यू टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. ये एंट्री क्यों पास करनी पड़ती है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज, इसका सपोर्टिंग नहीं है, इसका कोई वाउचर नहीं है, ये एक एंट्री करनी पड़ेगी. इसीलिए इसको बोलते एडजस्टमेंट्स. इसीलिए इसको क्या बोलते? एडजस्टमेंट, जिसका कोई सपोर्टिंग नहीं है. सपोर्टिंग में कितना दिख रहा है? ओनली 1,10,000. आपने साइन लिया रहेगा ना. एक बंदा मेरे पास काम कर रहा है. ए चल ये ले अप्रैल की सैलरी, ये ले इधर साइन कर. ये ले मई की सैलरी, साइन कर. 7 जून को मैंने साइन करवाया. जून की सैलरी ली, जुलाई को साइन करवाया, 7 जुलाई को. पर बेटा मार्च महीने का साइन ही नहीं हुआ है, तो मार्च महीने को तो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे. हाँ सर करेंगे. क्यों सर? मार्च महीने में काम किया ना, तो खर्चा क्यों रिकॉर्ड करना है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? उसी साल में खर्चा किया या पेमेंट किया, नहीं किया, ये सेकेंडरी है. मार्च महीने में काम किया ना भाई, तो सैलरी रिकॉर्ड करने का. खर्चा 12 महीने का, पेमेंट 11 महीने का, पेबल 1 महीने का. 1 महीने का पेबल लाइबिलिटी है. सो व्हाट इज द एंट्री? एंट्री फॉर दिस, यस बेटा, 2 एंट्रीज हम लोग पास करेंगे. एक्सपेंस टू कैश एंड सेकंड एंट्री कितने मंथ्स का? 11 मंथ्स का. एंड देन एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल कितने महीने का? 1 मंथ का. एंड बेटा P&L में कितना जाएगा? P&L टू एक्सपेंस. देखो एक्सपेंस 11 मंथ से डेबिट, वापस डेबिट, एंड नाउ एक्सपेंस इज ट्रांसफर. इसको क्या बोलते? एक्सपेंस इज ट्रांसफर टू P&L. कितने महीने का खर्चा बताया? 12 मंथ्स का खर्चा दिखाया. दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल. 11 मंथ्स का पेमेंट, 1 मंथ का पेबल एंड 12 मंथ्स का खर्चा ट्रांसफर टू P&L. दिस इज कॉल्ड एज एक्रूअल कॉन्सेप्ट. एक्रूड, एक्रूड मतलब इनकर्ड. 12 महीने का खर्चा दिखाना. खर्चा कितने का दिखेगा? 12 महीने का. पेमेंट कितने महीने का हुआ? 11 मंथ्स का. सर 1 महीने का लाइबिलिटी, फिर भी खर्चा है, खर्चा 12 महीने का दिखेगा.
Okay, accrual concept. It's a heart of accounts. Okay. Now you only tell me. So this is first year key entries. Here we have finished with first year. Or this is called as closing entry. This is called as closing entry. इसका वाउचर मिलेगा, इसका नो वाउचर, सपोर्टिंग नहीं होता इसका. 11 महीने की ठप्पे साइन होंगे, 11 मंथ्स का साइन होगा, एक महीने का नो साइन, बट स्टिल यू हैव टू रिकॉर्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑल्सो, एंड देन वी ट्रांसफर इट टू P&L फुल 12 months. नाउ सेकंड ईयर सर, नाउ सेकंड ईयर. चलो सेकंड ईयर का आप लोग मुझे बताओगे. आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर थिंकिंग. सैलरी अकाउंट कैसे बनेगा बताइए. थिंक सैलरी अकाउंट. थिंक सैलरी अकाउंट फॉर सेकंड मंथ, सेकंड ईयर. सेकंड ईयर का सैलरी अकाउंट ओपन कीजिए. फर्स्ट ईयर का वेरी इजी सर. नाउ यू अंडरस्टूड सर. टू कैश 11 months, टू पेएबल 1 month, एंड बाय P&L 12 months. I want full account, beta. I want full account. I want full account of second year. Think it. चलो चलो चलो. अरे क्या स्मार्ट बच्चे मेरे, होशियार है एकदम. एक डिफिकल्ट वाला दूं क्या होमवर्क में, करोगे? डिफिकल्ट वाला होमवर्क में देता हूं. So this is example 1. अंडरस्टैंडिंग यू डोंट हैव टू राइट इट इन एग्जाम. एग्जाम में शॉर्टकट्स करने हैं. लेट्स सी. इनकड़ 12,000, इनकड़ ऑल 12,000. इनकड़ इज वेरी इजी रे. मजा पेमेंट में आएगा. So 12 into 12,000. So incurred is 1,44,000. Now tell me what is the paid. Paid is maja. What is the total paid beta? पेमेंट यहां पे लास्ट मार्च का पेमेंट होगा. लास्ट मार्च का पेमेंट 10, and then this is 12, 12, 12 or 11 months. So बेटा पेमेंट कैसे होगा? 1 month 10,000 and 11 month 12,000. So take on calci. It's very important. 10,000 last month का. So 12,000 into 11 plus 10,000. So you paid 1,42,000 plus. So 142 is correct. मार्च महीने का रेड पेन 1 month 12,000 still payable. मार्च महीने का 1 महीने का अभी भी बाकी है. फेब्रुआरी तक का पेमेंट हो गईला, मार्च का बाकी है. So what is the total amount you paid during the year? Now sir, salary account for second year. Salary account for second year. Second year.
सर क्लोजिंग पेबल becomes opening payable by salary payable opening. How much? 10,000. कितने महीने का? 1 month. To cash. How many months? 12 months. And to closing payable, it's 1 month. And by P&L is for 12 months. See, debit side 12 plus 1, 13. Credit side 12 plus 1, 13. So 13 months ka we have to record. First year mein no payable, no opening payable. But in second year, we start with opening payable. And that's why to cash 12 months. In first year, it is only 11 months. So beta 1 month पिछले साल का कितना था? Now you can do directly. 1 month 10,000. Sir, here 12 months into 12,000. 1,44,000. Year to year match किया. Month to month match किया. Sir, cash 1 month 10,000. 11 months 12,000. एक महीने का 10,000. 11 महीने का 12,000. कितना आया था रे? 1,42,000. And here still 1 month ka pending, it's a 12,000. See whether it is tallying or not. Yes, it is tallying 1,54,000. Salary account. So this is your ledger account. By payable, by P&L, to cash and to payable. Getting it or not? Yes, very good beta Sarvesh. सर ये समझ में आया ना? पूरी जिंदगी अकाउंट समझ में आया, समझ लो पूरा अकाउंट समझ में आया. अरे सेकंड ईयर समझा क्या? थोड़ा मुश्किल करूं इसको? थोड़ा सा टफ दूं क्या? सो देखो, जो क्लोजिंग था वो सेकंड ईयर में ओपनिंग आया 10,000. इनकर्ड इस महीने की सैलरी कितनी? इस साल की सैलरी 12,000, 12 महीने का बाय P&L. सर टू कैश कितना पे किया? अरे पहले महीने में 10,000. सो 1 मंथ 10,000 पिछले साल का. एंड 11 महीने का 12,000 वो पे किया. एंड टू क्लोजिंग पेबल एक महीने का अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, मार्च महीने का. समझा? सो दिस इज अ प्रोफॉर्मा. दिस इज एक्सपेंडिचर प्रोफॉर्मा. ओके, शुड आई गिव यू वन होमवर्क? थोड़ा डिफिकल्ट? यस बेटा, फॉर मार्च. ओके, होमवर्क क्वेश्चन. Homework question. First year. Now see, in first year, April to September, 6 months, salary is 10,000. And October to March, next 6 months, salary is 12,000. Let's see how many of you can complete this. Second year, 3 years देने वाला हूं. Second year, April to September,
April to September, and October to March, 15,000. And third year, April to September, 15,000, and October to March, 20,000. Yes. Chalo. I'm giving you exactly 4 minutes for one year. 5 minutes deta hu. I just want to see how many of you are brilliant students. Just want to check. You can do it later, but suppose you can try it. I will tell you the answer after 5 minutes. तो 5 मिनट देता हूं आपको. टिकी जी 5 मिनट हमारे दोस्तों को दी जाए. So how many of you can complete it? चलो. I just want to see brilliant students कितने हैं. एक ही इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है. Let's do it. बेटा सेम नोटबुक में लिखना है आयुषी. 100 पेजेस नोटबुक में. Don't worry if you are getting wrong answer. It's okay, बेटा. I want for all 3 years, Ritu. Three minutes over almost. Okay, बेटा रितु. You can think afterwards. Don't worry. एक बार नहीं आएगा, फिर शांति से बैठ के सोचना, आ जाएगा.
अभी कैसा है, मैं सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है ना वो देख रहे हैं, अभी तू साइंस बैकग्राउंड से तो इट विल टेक सम टाइम बेटा, पर एक बार समझ में आया ना तो आप लोग बहुत तरक्की करते हो, डोंट वरी। चलो ठीक है, होमवर्क का आंसर आई विल टेल यू नाउ, लास्ट 30 सेकंड्स। चलिए, सो सैलरी अकाउंट बेटा, बेटा फर्स्ट ईयर में टू कैश, सी टू कैश 10,000 into all 6 months. 10,000 all 6 months you will pay, but 12,000 you will pay only for 5 months. March महीने का you won't pay. So two payable. So this is 11 months. Two payable 1 month, that is the last month. March का salary you won't pay. So two cash 11 months, two payable 1 month, and by P&L 10,000 for 6 months and 12,000 for 6 months. All 12 months incurred. So what is the answer? 10,000 you paid for 6 months, 60,000, and 12,000 into 5. Sorry, 10,000 into 6 memory plus 12,000 into 5 memory plus 1,20,000. And two payable 12,000. In first year, it is 1,32,000. 60,000 plus 72,000. Matching 132, 132. So first year it's very easy. Sir, second year. Second year beta, two payable becomes by payable 1 month. By payable 1 month. Let's see अभी ये कितने लोगों को आता है. By payable 1 month. By P&L बेटा it's very easy बेटा, it's 12 months. ये मैं पहले लिख लेता हूँ. So by payable 12,000 6 महीना, 15,000 6 महीना, 12,000 6 months, 15,000 6 months. Second year 12 15 6 months, 72,000 plus 90,000. 15 6 are 90, 162 here. Two cash 1 month 12,000 plus 6 months पूरे 12,000 plus 6 months 12,000 करंट ईयर के, ये लास्ट ईयर का, ये करंट ईयर का, एंड 5 months only 15,000 of current year. So 1 plus 6 plus 5, 12 months पूरा पेमेंट, बट लास्ट ईयर का एक महीना, करंट ईयर के 6 months by 12,000 and 5 months by 15,000. बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
72,000 plus 75,000 plus 12,000. Memory recall 2,30,000. Sorry, वापस एक बार 72 plus 75 plus 12 1,59,000. And two payable 1 month मार्च महीने का 15,000. This is for current year. This is for current year. This is last year. And this is purely current year. This is purely current year. And now third year, let's see third year. By payable 1 month, still you have one chance to understand. By P&L beta 12 months. By P&L 12 months. 15 and 20. 15,000 6 months. 20,000 6 months. To cash बेटा पिछले साल का 1 month 15,000 last year. Current year first 6 months you are going to pay. So 6 months into 15,000 and plus 5 months. Current year ka 5 months into 20,000. So 15 plus 15 6 90 plus 100. 2,05,000. This is 90 plus 120. 2,10,000. And two payable only current year. 20,000. 2,25,000. And here 162 plus 12. जिनमें पेशेंस है और जिनमें कोई चाहत है करने का वही बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझते हैं. 174. एंड वंस यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ना, कोई ताकत नहीं है जिसको आप अकाउंट्स नहीं समझेगा ऐसे बच्चों को. See, this is the first year. You can take screenshot and write afterwards. एक और ट्राई करोगे? नॉट अभी, होमवर्क में. होमवर्क में और एक ट्राई करोगे? लास्ट वन. यस, प्लीज डू इट. यू हैव आंसर्स, यू कैन चेक इट आफ्टरवर्ड्स. तो आप लोग प्लीज कृपा करके. हाँ, अभी मुझे बताइए कितने बच्चों का सेम आंसर आया. मेघना चौहान इज सेइंग सर आई गॉट द सेम आंसर. वेरी गुड मेघना. एक स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमें मिल गया. यस, वेरी गुड बेटा मेघना. और कौन है who got the correct answer? Same answer. Salary, second year, last year or current year? Sir, please check mine. Yash Chandak अभी देखो आपको. Manish Jain got the same answer. सर्वेश का same answer. साकिया का same answer. Very good. Yes. Very good. थर्ड ईयर का कितने लोगों का बराबर आया देखो. थर्ड ईयर का. Yes, very good. I don't want only first year. Yes, beta Pramod, very good. ठीक है. Oh my God, वर्णिका, how you can skip beta? Month to month match नहीं किया क्या? 1 month plus 12 months, 13 months. Here also beta 12 months plus 1 month. 13 match करना चाहिए ना. And then you will get this split. फिर आपको उसका bifurcation मिलना चाहिए. Should I give you last one beta homework में? Very good.
नाउ लास्ट होमवर्क बेटा, होमवर्क में और एक थर्ड होमवर्क इसी का। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट इन होमवर्क, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। फर्स्ट ईयर April to September 10,000 C, then October to March 15,000. Second year April to September, now what is change beta? 20,000 and 25,000. Third year April to September 30,000, October to March 35,000. Now what is the different thing in this question? सिर्फ डिफरेंस क्या है वो बताइए। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मेघना, आदिश्री जी, जाकिया, वेरी गुड बेटा। सी दी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। What is the difference in homework number 2 and homework number 3? It change every year. Very good beta. In homework 2 it's same in year first second half and second year ka first half same. Now it is changing in every half year. Let's see how many of you can do it. So friends, what is expenses pro forma? Expense का pro forma क्या है? चलो याद कर लो। एक्सपेंस का अभी तक जो सिखाया, अभी तक सिखाया, बाय एक्सपेंस पेबल लास्ट ईयर, बाय P&L current year, to cash last year and current year, and to payable it's of current year. Okay, to payable last year का भी पे करना बाकी हो सकता है, पर not of next year. So nothing is for next year. And prepaid में क्या आएगा? Next year. That is we are doing it on the Tuesday. पर सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट करना है मेरे दोस्त। ओके, ट्रायल बैलेंस और सब्सिडरी के बुक्स के क्वेश्चंस पिछले बैच में से देख के करना है। 16 जुलाई 16 जुलाई 2022 का सेशन और ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक्स। प्लीज वॉच इट एंड वी विल कम बैक ऑन ट्यूसडे with full of energy and homework answer, and you have to watch these sessions if you are not still clear for this question. It's okay, आपको अभी भी नहीं समझा होगा, it's okay, watch these sessions for minimum 2 to 3 times. This is heart of accounts, accrual concept, payable, और मैंने line by line आपको clear करवाया है। Don't skip today's session, it's very important. चलो, so मिलते हैं Tuesday को। Till that, take care and I'm going to miss you all. Thank you.